మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఆదివారం ఉదయం నమో యువ పరుగు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు। ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ హాజరయ్యారు। అనంతరం బీజేపీ ఎంపీ తేజస్వి సూర్య మరియు నటుడు ప్రభావశీలుడు మిలింద్ సోమన్ జెండా ఊపి నమో యువ పరుగును ప్రారంభించారు। ఈ కార్యక్రమంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు। भारतीय जनता पक्षाचे यूथ आयकॉन तेजस्वी सूर्याजी, आपले अध्यक्ष अमित साटमजी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर आणि उपस्थित सर्व माझ्या तरुण मित्रांनो, भावांनो आणि बहिणींनो, आज आपण सगळे लोक या ठिकाणी नमो युवा रन करता एकत्रित आलो आहोत। देशाचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या अमृत महोत्सवी जन्मदिनाच्या निमित्ताने संपूर्ण भारत कृतसंकल्पित झाला आहे आत्मनिर्भरतेकरता। आणि आत्मनिर्भर भारतामध्ये आत्मनिर्भर युवा ही आपली संकल्पना आहे। आपण सगळ्यांनी भारताची ताकद ऑपरेशन सिंदूर मध्ये बघितलेली आहे। भारताची ताकद आणि भारताची एअर डिफेन्स सिस्टीम अशी आहे की भारताला कोणी पराजित करू शकत नाही। पण एकच गोष्ट भारताला पराजित करू शकते, ती म्हणजे ड्रग्स। जर आमचा युवा हा नशामुक्त असला, ड्रग मुक्त असला, तर भारतावर कुठलंही आक्रमण या ठिकाणी चालू शकणार नाही, भारताला कोणी पराजित करू शकणार नाही। पण आमच्या युवाला या ठिकाणी जर आतून पोकळ करून टाकलं तर मात्र या देशाचं भविष्य असणार नाही। आणि म्हणूनच आपण ही थीम घेतलेली आहे, नशामुक्त भारत, नशामुक्त मुंबई, नशामुक्त महाराष्ट्र। आणि मला विश्वास आहे की आपले ही जी तरुणाई आहे, ही तरुणाई या ठिकाणी नशा करेल तर देशभक्तीचा नशा करेल। ही नशा करेल तर या देशाला सर्वोच्च स्थानावर